deliver speech. Take me. दे. Good afternoon, one and all. It gives me immense pleasure to introduce the Professor Kuldeep Kumar Pandey ji, Professor and Head Department of Sangyaharan, IMS BHU Varanasi, to the gathering. He is having the session, the working in this particular institution for more than 32 years, and he will be delivering the deliberation on cancer, global challenges and perspectives in Ayurveda. I am handing over the mic to Dr. K. Pandey sir. Afternoon to all of you, respected dignitaries on the dais and the learned audience of the dais. I'm thankful to the organizers giving me this opportunity to share my experiences regarding the cancer, pain, and palliative care and the perspectives of Ayurveda. I am the scholar of the institution of the great saint of the era, where he has established all such specialties for the sufferings and to cure or to mitigate the sufferings of the society. There is no any other introduction of mine. Dear friends, we are all well known that when we take birth, our parents they took pains, and when the offsprings are born, they realize the pain. And throughout entire life, we live with the pain, we drink the pain, we eat the pain, we try to abolish the pain, and ultimately we die with the pain, leaving pain behind friends, spouses, and the society. So, pain is the nucleus for which we are gathered here. Dr. Reddy has taken a lot of pains to convene this Congress, but that is not visible. But when you start feeling the pain of the each and every member, whosoever has contributed to build a nation, definitely he had taken a pain. So pain is the nucleus. We are here to pacify the pain. But misery is there. The entire globe or the universe, they are moving behind the pain. Either it may be money, machine, manpower, and method, tools and technologies. But problem is here. I have made the anti-clock rotation of the globe because to pacify, to find the solution, we are forgetting our moral ethics. That's why we are unable to mitigate the pain at any cost. My dear friends, आप पेन को कैसे समझोगे? जरा अपने चिकोटी काट के देखो. सब कोई काटो. Do you feel pain? Yes, you are alive. But the moment you start feeling pain of the society, you are not a man, but a human. So try to become a human, not a man. It is not important that to
learn about the pain of the others. The problem is who is going to take care to minimize the pain, to care the sufferers. That is the meaning of pain. Now coming to the point, I am the scholar of anesthesiology, pain and palliative care. For the you people, students and scholars are new chaps of the Ayurveda. Our department, Sangyaharan, is the only department in the entire world, not only in India. Anesthesiology, Sangyaharan, is the only one department ever so established in Mahamana institution. And I'm proud to say that I'm the scholar and currently the professor head of the department since 13 years. So this is my responsibility to share the concepts and to solve the problems. What is the cancer? Cancer is not a disease, but it is a symptom. Proliferative disorders जहाँ बहुत सारे गुच्छे बनने शुरू हो जाते हैं. Transformation and dysregulation of the apoptosis then ultimately get converted in invasion, angiogenesis, and then metastasis. आगे की ये तीन अवस्थाएं बहुत ही घातक हो जाती है, तो हमें वहां पर केयर करना है. ऐसा नहीं कि हमारी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया. In 1975, they established a program, National Cancer Care Program, and later on, after 10 years, established another. But I'm sorry to inform that 9 out of 10 are cancer sufferers. And 28% are more than 74 years. This is not a landmark. Landmark is at the age of 74 when a person either retired or his or her children are away from his home. The time when he requires support of the family is debarred automatically from the family. He is living with a cancer-like disease which always requires the concentration, but it is not like that. 14.13 lakhs new cancer cases. आप बाग में फूल लगाओ अच्छा लगता है. हमारे देश में इतनी सारी पॉपुलेशन हर साल पैदा हो और उसमें से 9.16 lakhs दर्द में तड़प के मर जाए. This is the point to be noted. महिलाएं, female are more prone, 103% per lakhs as compared to the 94%. They are more sufferers. There might be many more reasons why they are more sufferers of the cancer, and especially the breast cancer, cervical cancer, and the oral cancer in Purvanchal. Breast and cervical cancers are many times because of the most of the society or this population is living in the villages. So they are either with the social boundaries, they are unable to explain their problems. These are all regarding this graphic interpretation, but क्या इलाज नहीं होता? इलाज होता है, but active cancer therapy में जो pain होता है 30 to 50% they are painful therapies, and painful death is more than 50%. But this is challenging to the authorities of the governments and the healthcare sectors. 69 point patient they say मुझे मर्सी किलिंग चाहिए, मुझे आत्महत्या कर लेना है. अब सोचो क्या स्थिति होती है उस पर्सन की जो कैंसर सफरर है. वो कहता नहीं मुझे तो मरना है, मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता हूं, मेरा कोई इलाज नहीं है. यहाँ तो प्रॉब्लम कहाँ, चैलेंजेस कहाँ उठते हैं? जो जो दवा की दर्द बढ़ता गया. देयर इज नो रिस्पॉन्स ऑफ द ट्रीटमेंट. पुअर क्वालिटी लाइफ,
सोशियो इकोनॉमिकल, सब कुछ। मेरे पास पेशेंट आते सब कुछ लुटा के आते हैं, उनको देखो तो दरिद्र नारायण भी माफी मांगता है, यार मेरे से आगे तुम खड़े हो जाओ लाइन में। ये स्थिति हो जाती है, कैंसर में कैसे तबाह होता है। और लॉस ऑफ फेथ इन गॉड, तब वो कहता है भगवान भगवान कुछ नहीं होता है। आप फेस करो उस प्रॉब्लम्स को, देन यू विल रियलाइज व्हाट हैपेंस व्हेन दीस पेशेंट्स सफर, बिकॉज इट इज लाइक एन आइसबर्ग। बहुत सारी छोटी इंफॉर्मेशन सीटी एमआरआई पेट स्कैन ब्लड इन्वेस्टिगेशन से हमको मिलती है, बट अ लॉट मोर इज इनसाइड द पेशेंट एंड फैमिलीज that is never explained by the patient or never observed by the physician himself. So there is a big story inside the patient's body. कैंसर को ट्रीट करने में प्रॉब्लम कहाँ आती है, इसलिए अभी तक इसका सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। छोटी सी बात है, लाइफ स्टाइल। अभी महाराज जी बोल रहे थे कि अपनी लाइफ स्टाइल ठीक कर लो 12 बजे के पहले, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हम चाह के भी नहीं ठीक कर सकते हैं। अब कभी कभी दिल्ली ट्रेन से जर्नी करिए, देखिए आधी पब्लिक रास्ते में सोती रहती है, टिफिन लेके जाती है, सवेरे 4 बजे ड्यूटी पहुंचना है, घर पहुंच रहा है, पत्नी बच्चे सो गए, उसका टिफिन रख के फिर वो 3 बजे उठ के चल देता है। बहुत सारे, बट majority of the patient can be cured and treated. Cost effectiveness, less information, and many more things I don't like to discuss here. Then कैंसर का मरीज जब जिंदा रहता है, कैंसर के साथ जिंदा रहता है, तो क्या प्रॉब्लम, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स व्हिच a cancer patient feels? Then shock, as and when you come to know that your disease is not going to be cured by any means, then he is well shocked. मुझे कैंसर हो गया है, मैं तो मर जाऊंगा। The moment he start feeling like this, the entire family, either they are not the victim of the cancer, but they suffer with the cancer-like disease. Since support and education, these are the another problems with the patients. He was executive engineer. Can you imagine socio-economical and physical unrest and status? There is a metabolic dysfunction, quality life, symptomatic disorders are prevailing, and ultimately immunity is lost. What happens? The problem of the patient, how it transfers from the patient to the spouses. This is here. And the depression, suffering, sleeplessness, anorexia, there are many more. कितने गिनाओगे आप? पेशेंट तो मेरे पास आते कहते हैं कि सर मैं तो बिल्कुल ठीक था, वहां से दवाई लिया, कल 2 रोटी खा रहा था, आज 1 रोटी खाया, और खाते समय मेरे पैर में खुजली हुई, खुजलाने लगा तो मेरी कमर में चमक आ गई, उसके बाद छींक शुरू हो गई। अब बोलो कैसे डायग्नोज करोगे? What was the real problem with the patients? So these are the certain challenges, and when there is no cure, so Ayurveda cures and cures the problems. Ayurveda says that cancer is not a disease, it's a symptom. What the disease is, to produce the cancer. अभी महाराज जी बोल रहे थे ना कि हमें कारण का पता करना है, तो त्रिदोषिक कारण होते हैं। Entire world is made up of 5 elements, and the integration of Ayurveda in newer dimension, you have to learn about the those dhatu, mal, and many more. So on these very fundamental principles, you scholars will turn open the unfolded stones. A big story is underneath that stone. You have to turn that one. I am just coming here. So in Shosho Samhita, you will find how the cancer is defined in Ayurveda. That is the Sofa, Granthi, Arvud, Adyarvud, Durarvud, then Vriddhi, and then ultimately Vranas. So there are references I have found in Charak Samhita. This is the concept of palliative care. Principles, Prakriti Vighat, and many more are the principles. I have left this slides because I have given very limited time for 20 minutes. So that's why I'm skipping. And this is very well with the organizers. You can take and share. So the tri-dimensional modules of Ayurveda, Deva Papashraya, Yukti Papashraya, and Sattva Vajay are the main focus where you have to cure the patients.
I started my journey in 1994 when I met Mr. Robert Tricos. He was the first palliative care president of USA, and he organized the very first conference at BHU. Then I was faculty there, and by his motivation, I came to learn about the palliative care in Ayurveda. How Ayurveda, I never claim and challenge that I can cure or I can abolish the cancer, but I say I can enhance your quality life. I can increase your immunity system. That's why you can win or you can supersede over the cancer-like disease. I have used many more drugs with the many more evidences. Herbal drugs are there. Some of those I will focus. Aromas. अभी क्या है ना, आप दवाई लगाते हो, खाते हो, इंजेक्शन लगाते हो, लेपते हो, पोतते हो, कहीं कहीं तकलीफ होती, घाव पे नहीं लगा सकते। अच्छा बोलो कि आप लोग एरोमा यूज करते हो फुसफुस खुशबू के लिए, क्यों करते हो? मूड एलिवेशन, भूख भी अच्छी लगती है, एनाल्जेसिक भी है, दर्द भी होता है। अभी 3 महीने पहले जब मैं फ्रांस में था, मैंने जाके वहां देखा हाउ द फर्स्ट फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड देयर इन पेरिस। I visited there and found that this is a very Ayurvedic science which has been established long back. So we can use aromatic. And सीता जी को अशोक के नीचे रखा, कृष्ण और राधा कदम्ब के नीचे, क्यों? I have studied on those plants and found that the aromas of these two plants are effective to depress the central nervous system excitement. And that I have found. So these are not the myths. There are a big story and scientific logistics behind that one. So I have used bhang. लोग मुंह से भांग खाते हैं ना बाबा की नगरी में। मैंने पाइल्स फिस्टुला के ऑपरेशन करा के भांग की बत्ती को उस ऑपरेशन के रास्ते में डाल दिया और अगले दिन तक मरीज को दर्द नहीं। It is very well documented in our text. I am thankful to the ancestors, those who have provided me this cannabis. इसीलिए इसको क्या बोला है? बिजया। बिजया पे काम करो आप लोग। This is the guideline for you people. See the patient of esophageal atresia after chemotherapy and radiation. पेशेंट को मैंने नहीं देखा 1997 2017 में। डॉक्टर्स दिल्ली एम्स ने बोल दिया कि अभी 3 महीने की मेहमान है। डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आए, पेशेंट ने खाया, दवाई लिया, 6 महीने बाद और धनतेरस के दिन जाके इसने पूरी मार्केटिंग की। 2 साल बाद आके मुझे आंचल से दुआ दी, आज जिंदा है। This is the patient from Nepal. This is from Nepal. You can see, and this is during lockdown period. I have used only herbal drugs, not the minerals. She is a lady, sister of one of the musician, Padma Shri awardee. She was suffering with the NHL, non-Hodgkin's lymphoma, and after she was fully paralyzed below umbilicus, and now she is working with the workers. And this is after before 2 years. Now she is flying from India to Paris and America to visit her daughter. This is a case of squamous cell carcinoma. You can find there a big cancerous lesion is there, but it is cured. Now you're enjoying his life. This is a case from the Gorakhpur, nearby the Gorakhpur. You can see the lesion. And after that, this was developed like this one. And during my treatment, last you can see the miracle of herbal drugs. Then coming to the another aspect, that is Agni Karma. आगे आप शल्य पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा क्षारात अग्निर्गरीयान, जिसको औषधि दीजिए, रस की औषधि दीजिए, काष्ठ औषधि दीजिए, पंचविध कषाय कल्पना दीजिए, लेकिन उसके बाद क्षार कर्म दीजिए, पानीय प्रतिसारणीय और स्थानीय सब लगाइए, बाद में अग्नि कर्म करिए, ठीक हो जाएगा। आज वही उनका रेडिएशन है। अभी तक तो मैं हर्बल कीमोथेरेपी की बात कर रहा था, नाउ दिस इज ऑफ रेडिएशन। यू विल फाइंड ये अनफॉर्चुनेट, इसको कॉर्न जानते हो ना, पैर में
कचक लग जाती, गांठ जैसा तालू में हो जाता है. He was operated for corn and ultimately developed squamous cell carcinoma. You can find, इसको amputation बोला कि यहाँ से थाई पे से पैर काट देंगे. पुअर फेलो रोता हुआ है. आज आप देख लो, आफ्टर 6 months he is quite happy. This is case of CA breast, MRM हुआ, उस माता का पूरा स्तन निकाल दिया गया, घाव नहीं भरा रेडिएशन के बाद. हमने कुछ नहीं किया, अग्निकर्म करके मधुष्टि का चूर्ण लाया और गेंदे के पत्ते का रस लगाया. घाव देख लो, आपके सामने है. डिस्क्लोज करता हूं, यू कैन यूज. आचार्य जी है, इनका देखो मैंने कनाबिस ऑयल लगाया यहाँ पे, सीड ऑयल. कनाबिस सीड ऑयल मेरे एक फ्रेंड है जर्मनी में, उन्होंने मुझे भेजा, आज भी भेजते हैं, मैं पेशेंट को फ्री में देता हूँ. सो आप ये देख सकते हैं कि कैसे थे आफ्टर मैं अग्निकर्म के बाद. नाउ यू कैन सी द रिजल्ट. दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट लेडी. उसके कान में पर्दा फट गया, उसको टिम्पेनो या मैरिंगोप्लास्टी बोलते हैं. मैरिंगोप्लास्टी कराया, 3 महीने बाद उसको कैंसर हो गया, मिडिल एंड एक्सटर्नल ईयर आया, और उसके बाद उसको ये कैंसरस लीजन हुआ, यहाँ पे भी इसकी इन्फेक्शन हो गया. बाद में मैंने इसको जब दिया, अब यू कैन सी द एक्सटर्नल एंड मिडिल ईयर इज completely cured. But this very lady came to my contact very late. That time when I observed in PET scan, the entire cerebral compartment was metastasized. So I could not save that one. ये लेडी, इसको कैंसर नहीं है, लाइपोमा है. बट कैन यू इमेजिन द पेन? ये लेडी रोने लगी जब इसने कहा कि सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इससे पेन नहीं होता. लेकिन मेरा 3 साल का बेटा मेरे से कहता, मम्मा आप दूसरे कमरे में सो, मुझे आपको रात में नींद खुलती है देख के डर लगता है. उस माँ से पूछो जिसने उसको 9 महीने पेट में रखा और उसका जाया बोल रहा है नहीं आप मेरे साथ मत सो. You have to find, you have to analyze, you have to feel the pain at this level. Ja. After chemotherapy, you will find a रोम की पेशेंट मेरे पास आई थी, एमआरएम हुआ, कीमो चढ़ा, फ्लेबाइटिस डेवलप हुआ, फैंटम लिम्ब बना, हाथ नहीं उठता था, दिन रात रोती थी. बट शी क्योर्ड आफ्टर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट. इंजीनियर, प्रोस्टेट कैंसर, कन्वेंशनल थेरेपी चली, गायनिकोमेस्टिया हुई, कभी कपड़े उतार के बच्चों के सामने खड़ा नहीं होता था. बाद में अल्टीमेटली मुझे इसकी गायनिकोमेस्टिया जब हुआ तो ऑपरेट करके हटाना पड़ा, हार्मोन थेरेपी आयुर्वेद की दिया और नाउ ही इज क्योर्ड. दर्द जब होता है तो मरीज क्या कहता है? भाई हम लोग तो जाते हैं ना, चाहे मॉल में भी जाए, अभी मॉल की बात कर रहे थे ना, मॉल में भी जाए तो कहते हैं यार डिस्काउंट कितना है, तो इसको भी तो राइट मिलता है ना. तो ये दर्द देवता को बोलता है, ओ गॉड गिव मी सम डिस्काउंट, आई एम योर डेली कस्टमर. आपको दर्द यहां समझना होगा. आयुर्वेदा एंड एलोपैथिक और एनी अदर पैथी, बोथ अगर देखो एक ही पैथी से सब ठीक होता है या एक ही टेबलेट से हर बुखार हर इन्फेक्शन ठीक होता है तो जरूरत नहीं थी इंडस्ट्रीज की, ना मेडिकल कॉलेजेस की. लेकिन हम सबको सोसाइटी में रहना है, तो सोसाइटी में जितनी भी विधाएं हैं, या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धातुवा समा. दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल, वी हैव टू फॉलो दैट वन. सो ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव स्ट्रेटजीज हमको मानना होगा. वन इज sword, तो we are shield. We have to work like this one. So approach preventive, supportive, and the management of the complications. We should focus on the management of the complications. मरीज आपसे क्या मांगेगा? सेटिस्फैक्शन. कैसे सक्सेस होंगे? अच्छे से सुनिए मरीज को. हमारे स्कॉलर्स एक दो हैं यहाँ पे, कहते सर आपके कितना धैर्य है, आप 15-15 20-20 मिनट मरीज की बातें सुनते रहते हो. हमने कहा जब तक सुनोगे नहीं कुछ नहीं निकाल सकते हो. जब प्राइवेट में बैठोगे ना तो उसकी अंटी से 5 रुपया निकालना मुश्किल हो जाएगा. अभी सुन लो, आदत डालो. सो दिस इज बेटर एक्सप्लेनिंग एंड बेस्ट रिहेबिलिटेशन सेटिंग. दिस शुड बी मेन फोकस.
you have to make your patient independent. उसको अपनी दैनिक क्रिया के लिए कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए. You have to make that one. So immunomodulators, analgesic, anti-cancerous, and nootropic antidepressant. These are certain works which I have. You have to make umbrella care. आप छाता लेके खड़े हो जाओ, हर पैथी नहीं डॉक्टर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, म्यूजिशियन है, गाना गाने वाला है, मरीज के पास बैठा दो, कुछ देर गाएगा, मन बहल जाएगा. रामायण पढ़ने वाला है, धार्मिक किताबें सुनाने वाला है, स्पोर्ट, इंडोर गेम्स, टीवी, कैरम, कुछ भी उसके साथ करो. डाइवर्जन ऑफ माइंड एंड एंगेजमेंट ऑफ द डिफरेंट बॉडी सिस्टम इज वेरी मच एसेंशियल. बहुत सारे लोग हैं इसमें डिफरेंट. हम लोग सब एक ही टेक्स्ट पढ़ते हैं, कुछ उसमें एक कीवर्ड निकालते हैं, फार्मूला करते हैं. किसके लिए? फॉर द पेशेंट. रिसर्च स्कॉलर दे हैव टू, बट हमें ये होना है, we have to unite and collaborate with each other. Then only we can say. Unless you are not having a sympathy with the patient, you are not really a scholar of any system or any pathy. जब तक आपके अंदर संवेदना नहीं है, आप किसी की वेदना नहीं पढ़ सकते हो. Mind it and note it. So these are the certain works which I used to perform as a hospice. Hospice is मतलब कि जहाँ पे कोई नहीं केयर करने वाला है. If you go and attend the care of the patients, those who are really terminally ill, and then you have to provide your company as well as you have to provide some sort of medication to cure the patient for the different body system disorders. Then only. किसी ने कहा कि अच्छी दवा क्या होती है? मैंने बोल दिया केयर एंड लव. उसने कहा अगर ये काम नहीं करे तो इंक्रीज द डोज. डेफिनेटली विल. थैंक यू ऑल. I thank Professor K. Pandey sir for a wonderful session. I request chairperson and